Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's session I'm going to share with you 50 Hindi to English sentences, which is guys very important for you. This will help you to improve your English. It will help you to daily life conversation. You can use these sentences in your conversation to make your conversation very advanced and easy. Okay, so watch this video till the end without escape, and don't forget guys, like, share and subscribe. Without any further delay, let's get start into the video. As you can see that on your screen, फर्स्ट सेंटेंसेस इज हियर दैट मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है. इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन हाउ यू कैन से दैट इन दिस वे. आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक. सो इफ़ यू यूज़ दिस सेंटेंसेस समटाइम्स, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो स्कीप देयर हिंदी एंड पुट देयर इंग्लिश. से in English that I have realized my mistake. And another second one is that वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है. In English we can say that he is very serious about his work. He is very serious about his work. And third is that मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. In English I trust you completely. Fourth is that उसने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया. In English we can see that he shattered my expectation. एंड फाइव इज़ दैट मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. यू कैन सी दैट आई कम्प्लीटली अग्री विथ दिस. सिक्स इज़ दैट वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही रन्स अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड सेवन इज़ दैट तुम्हें समय की कदर करनी चाहिए. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट यू शुड वैल्यू द टाइम. एंड एट इज़ दैट मुझे इस फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट इन दिस वे आई विल हैव टू रिकन्सिडर this decision. Okay, so guys, all that sentences is very important. If you use these sentences in your conversation, so that your conversation will become very easy. Okay, so use all that sentences in your conversation. नाइन इज दैट वो दिखावे में विश्वास नहीं करता. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही डजंट बिलीव इन शोइंग ऑफ. टेन इज दैट हालात मेरे खिलाफ थे. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट द सर्कमस्टेंस वर अगेंस्ट मी. 11 इज दैट उसने बिना सोचे समझे फैसला लिया. In English we can say that he made a decision without thinking. Sometimes someone is made decision without thinking. If you are saying that उसने बिना सोचे समझे फैसला लिया, you can say that in English he made a decision without thinking. 12 is that मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. In English we can say that I will try my best. If you want to say that मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अपने साइड से बेस्ट करूँगा, सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड 13 इज़ दैट तुम्हारी बात में दम है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट योर पॉइंट मेक सेंस. 14 इज़ दैट उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया. इन इंग्लिश यू कैन से दैट ही रिफ्यूज टू हेल्प मी. 15 इज दैट मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ या करती हूँ. इन इंग्लिश यू कैन से दैट आई अप्रिशिएट यू. 16 इज दैट वो हर बात को दिल पर ले लेता. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही टेक्स एवरीथिंग टू हार्ट. 17 इज दैट मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी information or anything, then you can say that I have no information about this. Yeah, I have no idea about this. Okay. 18 is that उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया. If someone is ignore you, you can say that he ignored me. It's a very simple sentence. He ignored me. And 19 is that हमें सच का सामना करना होगा. In English we can say that we have to face the truth. We have to face the truth. It means हमें सच का सामना करना होगा. 20 is that वो अपने वादे से मुकर. If someone is backed out of his promise, then you can say that he backed out of his promise. It means वो अपने वादे से मुकर गया. 21 is that मुझे उस पर शक है. In English we can say that I doubt him. And 22 is that वो अपने शब्दों पर कायम रहा. In English we can say that he stood by his words. 23 इज़ दैट मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती.
In English, we can say that I don't want to miss this opportunity. 24 is that उसने मुझसे झूठ बोला. In English, we can say that he lied to me. 25 is that मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है. In English, we can say that I need to talk to you about something important. 26 is that वो हमेशा बहाने बनाता रहता है. In English, we can say that he keeps making excuses. 27 is that मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ. In English, we can say that I can understand your feelings. And 28 is that यह मेरे बस की बात नहीं है. In English, we can say that this is not my cup of tea. If someone told you that if someone states you that do these things, so if you don't want to do this thing, अगर आप सोचते हैं कि ये आप नहीं कर सकते हैं, okay, if you can't do this thing, so you can say that this is not my cup of tea. It means ये मेरे बस की बात नहीं है. 29 is that उसने मुझे गलत समझा. In English, we can say that he misunderstood me. 30 is that मुझे इस बात की खुशी है. In English, we can say that I'm happy about this. 31 is that वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया. In English, we can say that he could not accept his defeat. 32 is that मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ. In English, we can say that I am focusing on my goal. 33 is that उसने मुझे प्रेरित किया. In English, we can say that he inspired me. 34 is that मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है. In English, we can say that I have no complaints against you. 35 is that उसने अपनी गलती मान ली. In English, we can say that he admitted his mistake. 36 is that मैं परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती हूँ. In English, we can say that I adapt myself according to circumstance. And 37 is that वो अपनी सीमाएं जानता है. In English, we can say that he knows his limit. 38 is that मुझे इस बात पर गर्व है. In English, we can say that I am proud of this. 39 is that उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी. In English, we can say that he puts in his full efforts. 40 is that मुझे तुमसे उम्मीद थी. In English, we can say that I had expectation from you. अगर नहीं रहती तो बोलिए I had not expectation from you. Okay. 41 is that वह हमेशा सच बोलता है. In English, we can say that he always speaks the truth. 42 is that मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी. In English, we can say that I will not disappoint you. If you don't want to disappoint to someone, then you can say that I will not disappoint you, never ever. Okay. 43 is that उसने मेरी बात अनसुनी कर दी. In English, we can say that he turned a deaf ear to my words. 44 is that मैं खुद पर काम कर रही हूँ. In English, we can say that I am working on myself. 45 is that हमें मिलकर काम करना चाहिए. In English, we can say that we should work together. 46 is that उसने मौके का फ़ायदा उठाया. In English, we can say that he took advantage of the opportunity. 47 is that मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है. If you don't like something, then you can say that I don't like this at all. 48 is that वह अपने फैसले पर अड़ा हुआ है. In English, we can say that he is stuck to his decision. And 49 is that मैं तुम्हारे साथ हूँ. In English, we can say that I am with you. And 50 is that सब कुछ समय पर निर्भर करता है. In English, we can say that everything depends on time. So guys, today's session is ends here. We'll meet very soon in next video with new session, guys. And I must want to say that one thing, whatever in this video I have shared with you, use all that sentences in your daily life conversation so that you can remember it for a long time. If you use these sentences, so your English will be definitely improve. Along with your English will be become very easy. So use and do practice each and every day. Guys, till then, bye bye. Take care. Stay happy and healthy. Thank you for watching.